So we already discussed about तमे आगु discussion करतो EMF. What is EMF? So E means what? Electromotive force. So what do you mean by that electromotive force? के कहबो? What do you mean by that electromotive force? So first of all, as the name suggests, there is a force part is there. So EMF is a force or energy. So we can write down EMF is a force or energy. So as you know that what is the relation between force and energy? Force and energy. So we know that energy is equal to force into displacement. Force into displacement. That is, we can say du, that is small energy, is equal to force into small displacement. So force is equal to how much? Du by dx. So what do you mean by this du by dx? This is nothing but what? Rate of change of energy. Rate of change of energy is nothing but your what? Force. Rate of change of energy is nothing but your force. So that means energy is required to provide a force. तुमको एनर्जी दरकार कौन करिया पाए? फोर्स पकेया पाए. If you have energy, then you should apply force. If you have not energy, then you are not applying any force. जहाँ पाखरे energy नहीं, से force पकेई परिवा नहीं. So force and energy are what? Related. So we can say rate of change of energy is equal to force. So this electromotive force, always remember, EMF is an energy. EMF is an energy first. So what does this EMF do? Now it applies force. It apply force. That means कहाँ ऊपर apply करे? EMF is pushing charges. EMF is pushing charges. That is, it giving energy to charges. It giving energy to charges. So that means what? That means तम जो चार्ज मूव करती, से माने फोर्स कोठु आनंती? They will get the force from EMF. So EMF पाखरे कौन अच्छी? EMF पाखरे एनर्जी अच्छी. He is able to, EMF is able to give force. तो जेहेतु EMF पाखरे एनर्जी अच्छी, तो EMF कौन दिए? फोर्स पकाए. So you can say it giving energy. Sir, it is giving it is giving energy. It is giving energy to charges. So जेहेतु चार्जेस मानो को ये एनर्जी दिए, सेहेतु चार्ज कौन करती? मूव करती. Till now, so it is giving energy to charges. So when charges get energy, they will move. So हम जब एनर्जी पाइबे से माने कौन करिए? मूव करिए. तो हम जानते एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और एनर्जी? Q into V. और वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज into पोटेंशियल. Similarly, potential केते हबो? Work done by charge. charge. Work done by charge. Now what is this work done? This work done is nothing but your what? Energy. Is it no? Energy or work done. Both are known as what? Both are same. That is work done or energy. So this potential is equal to W by Q. Now what is this potential difference or what is this potential? That is work done upon charge. जेतिकी चार्ज को मूव करिवो सेतिकी चार्ज रे केते वर्क डन हबो इज द पोटेंशियल. Understand my point or not? So that means we can say
if you have having a circuit, जदि तुम पाखरे गोटे सर्किट अच्छी एठी गोटे सोर्स लगी सोर्स कौन ना बैटरी बैटरी जहाँ भी हो सोर्स लगी ये सोर्स रो कौन अच्छी गोटे ईएमएफ अच्छी बुझुछ नहीं तो ये सोर्स कौन करिवो सपोज 1 कूलम चार्ज को मूव कला सपोज 1 कूलम चार्ज को मूव कला एटू स्टार्ट हला पुणी आसिकी एपटे रहिला प्लस रु गला माइनस को आसिला तो ये जो 1 कूलम चार्ज को मूव कला ए सोर्स रो तो किए मूव करूची ताको ईएमएफ मूव करूची किए मूव करूची ईएमएफ मूव करूची केमिति तो ईएमएफ हैला कोन होबे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ नाउ वी कैन से ईएमएफ इज ए सोर्स ईएमएफ इज ए सोर्स EMF is a source which provides energy to 1 coulomb charge to complete one cycle. To complete one साइकिल तो ये जो 1 कूलम चार्ज गोटे साइकिल सर्किट रो गोटे साइकिल कंप्लीट करिया को जो एनर्जी आनंती काटू आनंती ईएमएफ टू आनंती बुझिले नहीं सो ईएमएफ इज ए सोर्स और वी कैन से और राइट डाउन लाइक दिस ईएमएफ ऑफ ए सोर्स इज द एनर्जी और वी कैन से ठीक अच्छे या चेंज कर दियो डेफिनेशन ठीक लगुनी EMF we can write down here EMF of a source is the amount of energy or work done to move 1 coulomb charge to a complete one cycle ठीक है सो गोटे सोर्स रो कौन था ईएमएफ था ईएमएफ कौन करे व्हाट डू ईएमएफ डू इट विल प्रोवाइड एनर्जी कहा को एनर्जी दिए टू चार्जेस ताफल कौन हुए चार्जेस कौन करती चार्जेस सर्किट रे पूरा कंप्लीट साइकिल रोटेशन मारती सो केते चार्ज वी कैन से 1 कूलम चार्ज सपोज तमर जो बैटरी मिलूची मार्केट रे सेतरे लिखा होची 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट लिखा होची ना लिखा होनी बैटरी रे ए जो बैटरीटा मार्केट में मिलूची 1 वोल्ट दैट मींस व्हाट दैट मींस 1.5 वोल्ट इज नथिंग बट योर व्हाट that will be its EMF. That will be its EMF. That is W by Q is equal to kate 1.5 volt. Is not W by Q is equal to 1.5 volt. So what is this W by Q? W by Q is how much? 1 coulomb. 1 coulomb charge को move करियो ना. This is equal to how much? 1.5 volt. So work done कते है गला? 1.5 volt into 1 coulomb is equal to 1.5 joule is no तो ए बैटरी ईएमएफ कितना so what is the EMF of this battery ना EMF of this battery is equal to 1.5 volt what does it do ये कौन करे ना ये चार्ज 1 coulomb चार्ज को कौन करे मूव करे 1 coulomb चार्ज को मूव करे को पर्यंत मूव करिवो जे पर्यंत 1.5 जूल वर्क डन हेनी को पर्यंत मूव करथिवो as long as 1.5 joule work done has done है तो जो बैटरी तुम 1.5 वोल्ट रा आणुछ
से बैटेरी से कौन कर ना 1 कूलम चार्ज को मूव कर चलो कौ पर्यटन मूव कर चलो जो पर्यटन 1.5 जूल वर्क डन है ना बुझिपाल ईएमएफ कौन now you understood what is do you mean by EMF huh? You can write down here a 1.5 volt battery rotates the 1 coulomb charge then work done कितना होगा then work done is 1.5 जूल जूल बुझला सही बोली तुम कहो 3 वोल्ट रो कितना होगा सही 3 जूल रो वर्क डन करिवो से बुझियो ना तो आज जे बैटरी रो वैल्यू चेंज हे चलिवो ईएमएफ बढ़ी चलिवो वर्क डन भी बढ़ी चलिवो अच्छा what is the unit of EMF unit of EMF is volt is nothing but your what volt V is equal to W by Q you know W is a what work done joule by coulomb joule by coulomb is nothing but your what volt so remember this the EMF unit of EMF is volt so magnetic flux is nothing but your what lines of force linked to a surface जो तुम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए तो जेतिकी मैग्नेटिक फील्ड रो लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज ये बोली लाइन्स ऑफ फोर्स अछि मैग्नेटिक फील्ड रो जेतिकी लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट हबो तो एठी जदि मो गोटे सरफेस ड्रा करिवि जेतिकी अमाउंट रो लाइन्स ऑफ फोर्स आदरे लिंक करिवो दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स बुझला सर डेफिनेशन लगला होते the magnetic field or the write down magnetic line of force linked to a surface simple जेति की लाइन ऑफ फोर्स सपोज एटी चारटा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अछि एटा गोटे 1 2 3 4 तो केतरा लिंक करछि 1 2 3 सो मु कहबी एटी मैग्नेटिक फ्लक्स कते 3 बुझला बुझिपेला so we write down the definition here quantity of magnetic field quantity of magnetic field linked to a surface area is phi b is equal to b into a what is b is known as what magnetic strength magnetic field strength a is what magnetic surface area area of surface ये जो एरिया ऑफ सरफेस रो जेतिकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिंक करिवे ताको कहै छै मैग्नेटिक फ्लक्स हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज phi b is equal to b dot a b vector dot a vector so what is phi b always remember phi b is a what or magnetic flux is a scalar quantity always remember this is a scalar quantity that means we only require what we only require the link kete link करछि suppose गोटे वाटर फ्लो होउछि तुम चारिपटे कौन कर दोछ एठी गोटे बकेट रखिछ तो एथरे जति की पानी रहिबो बुझिछ नै जति की पानी रहिबो दैट इज ए व्हाट दैट इज योर फ्लक्स जति की पानी रहिबो सेटा होउछि कोन फ्लक्स बुझिछ नै सो ई पानीटा दी भलिया भाव में काम करुच्ची जिते फ्लो करुच्ची वेक्टर क्वांटिटी भाया काम करुच्ची जिते स्टेशनरी है कि बकेट रही जाऊँगी स्केलर क्वांटिटी भाया काम करुच्ची से भाई ये फील्ड लाइन्स भी दी भाया काम करती जिते फ्लो करेंगे आम वेक्टर क्वांटिटी नवा जिते लिंक कैलकुलेट करवा गोटे सरफेस को केते लिंक करुच्ची कैलकुलेट करवा सोटा स्केलर क्वांटिटी भाया काम कर सो मैग्नेटिक फ्लक्स रे हम कौन करुचे सिंपली लिंक केते होउची कैलकुलेट करुचे एतिकीटा लिंक होउची पांचटा लिंक होउची पांचटा फ्लक्स लिंक होउची कि 10टा फील्ड लाइंस लिंक होउची कि 20टा फील्ड लाइंस लिंक होउची सो दैट्स व्हाई
Your magnetic flux is a what? Scalar quantity. So we can write down here phi b as this is a dot product. So we can write down this as a BA cos theta. You know. Now the Yes. important part is what is B and what is A. A vector is nothing but your what? Area vector. A vector is nothing but your area vector. B vector is nothing but your what? Your magnetic field strength. Magnetic field strength. So what is theta? Theta is the angle between A vector and B vector. So A vector B vector भितर जो angle आसे ताको कहा जाए theta. तो केमिति? Suppose एटा गोटे surface. Suppose this is a surface. You know. Now area vector is always perpendicular to the surface. Area vector is always perpendicular to the surface. Now these are the lines of forces, magnetic lines of forces. We can write down like this. So the direction of lines of forces is this. Then this will be how much? B vector. The angle is equal to how much? Theta. This is the angle between B and A. Understand my point or not? So when the lines of force, the direction of area vector and lines of force are same, we can say theta is equal to 0. If it is perpendicular, then we can say theta is equal to how much? 90 degree, like this. Continue. How to calculate the magnetic flux? By using a simple equation, phi b is equal to BA cos theta. Now this is for what? This is for uniform or symmetric surface. Symmetric surface. जब surface टा symmetric थे तो मैं ये equation पकेगी बाहर कर दूँ. किंतु जब surface टा non uniform थी वो, for non uniform पाई कौन हबो? For non uniform पाई, suppose this one is your these are the magnetic field strengths or magnetic field lines. So if you consider a non uniform surface like this, so this is a non uniform surface. So how to calculate the magnetic flux for a non uniform surface? Always remember, in this case you will choose the small surface, and this small surface are known as what? ds. So this is, here we choose a small surface ds, here also we choose a small surface ds, like this. तो आम कौन करिया ना स्मॉल सरफेस चूज करिया, एई स्मॉल सरफेस चूज करिया. सिमिलरली या पई भी गोटे स्मॉल सरफेस चूज करिया, या पई भी गोटे स्मॉल सरफेस चूज करिया. नाउ देखो ए जो स्मॉल सरफेस डीएस रो एरिया वेक्टर यारे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, and this is the strength. So what is the theta? This is the theta. So how can you calculate the magnetic field strength? तो ये जो स्मॉल सरफेस है मैं ds नहीं गले, ds1 ds2 ds3 ds4 ds5 ये भली नले. तो how to calculate the magnetic flux? Small flux, so you can write down here the small flux, that is your what? d phi. Small flux को हमें कौन कहवा? d phi is equal to, तो केता हवा हमरो according to our definition BA cos theta हवा दरकार. What is B? B is the field strength. What is A? A is the area vector. Here we have taken what? B dot. Here we taken, instead of A we have taken what? Small surface ds. That is B ds cos theta. This is your d phi. Now if you integrate this, integration of d phi is equal to integration of B ds cos theta. Understand my point or not? Yes, sir. Sorry. So integration of df is equal to how much? Phi. Phi is equal to BDS cos theta, or which is equal to B vector dot ds vector. Isn't it? So this is the definition, or this is the formula for what? For non
uniform. uniform, बुझला? And this is the formula BDS, sorry, BA cos theta is for uniform surface. This is for uniform surface. And this is for non-uniform surface. तो simple non-uniform surface रे कौन करिवो? तेमे small area choose करिवो. Small area choose करिकी प्रत्येकंकर d phi calculate करिवो. तो यार suppose यार d phi हैला केते? d phi 1. Suppose यार हैला d phi 2. यार हैला d phi 3. तो एई भली समस्तंकर calculate करिवो d phi 4. यार है गला d phi 5. तो calculate कला पर सब तो कौन करिवो? मिसई दबो d phi 1 plus d phi 2 plus d phi 3 plus d phi 4 plus d phi 5 like this continue. तो এই जो addition करा होची এই addition टा हमें कोउथरे करू continuous case रे कोउथरे करू integration through रे करू बुझिल नै सेहिति पई for that case we are considering a d phi as a small source, small flux for a small surface ds, then we integrate over the total area to get the total flux. Understood?